I start about the study group thing, I just wanted to know your this part, like what information you have about study group. I just wanted to know that. सर यूके का एसएच जो है इंफॉर्मेशन, तो मतलब जैसे कि यहाँ पे मोस्टली इंटरनेशनल ईयर वन फाउंडेशन कोर्स इस तरीके से ही प्रोग्राम्स अवेलेबल है। दो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जिसमें कि डायरेक्ट एंट्री थी। एक आई थिंक हार्टफोर्ड समथिंग कोई यूनिवर्सिटी थी, उसमें बहुत पहले डायरेक्ट प्रोग्राम्स मास्टर्स डिग्री के ऑफर किए जाते, फिर बाद में वो भी नहीं रहा। और जितने भी मैंने जैसे रॉयल हॉलो में डाली है एप्लीकेशंस पहले, तो वो मैंने इंटरनेशनल ईयर वन के लिए ही डाली है। तो मुझे जहां तक है कि इसमें मास्टर्स डायरेक्ट एंट्री या बैचलर्स डायरेक्ट एंट्री नहीं है। Okay, so when it comes for the study group UK portfolio, we have around 12 to 13 universities with us where we are offering pathways in terms of foundation, international year one, and pre-masters. Apart from that, we have one exclusive university with us, that is Royal Holloway University of London, one of the top university of UK, plus London-based location, where we are offering direct admissions into the bachelor's and master's both. Okay. So how do you want me to start? Like, should I start with Royal Holloway direct admissions? Yes, or sir. should I- Royal Hollow. Okay, perfect. So when it comes for the Royal Holloway, the requirements for the UG part, the students who are going after 12th, we need minimum 80% in their boards to get admission into the direct entry. ओके सर, यहाँ पे कोई ऐसा है कि सीबीएसई बोर्ड होना चाहिए? Nahin, nothing. ओके 80% in their 12th boards, and we are happy to accept the student for the first year of bachelor's. ओके But as Gujarat या पंजाब में आप देखते होंगे that there are students who are with 60% only, or 65 or 70 maximum, right? So what about those students and whose preference is mainly for the Royal Holloway University only? So we can suggest those students to go for the International Year 1 in Royal Holloway University of London. Right? So it would be the same first year of bachelor's in the same university campus. The classes would be different though, and the number of students would be less compared to the direct entry into the first year of bachelor's. I'll come to the point at the later stage that why one should go for the International Year 1 rather than going for the first year of bachelor's. An IELTS requirement 6.5, no less than 5.5 for the UG. When it comes for the other English proficiency test, we are accepting PTE, TOEFL, and Duolingo also. इनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी सर? Just let me share my screen and explain you. I hope my screen is visible. So when it comes for the requirements thing, it varies from department to department or course wise. So when it comes for the School of Business and Management, we have different courses available with us. And I'll go with the general one, that is Strategic International Business and Management courses or the entrepreneurship courses. For the UG, the IELTS requirement would be 6.5, no less than 5.5, but sits in writing. Pearson's test of English, 61 overall, with no scores less than 51 and 54 in writing.
TOEFL 88 overall, with scores 22 in reading, 17 in listening, 20 in speaking, 24 in writing. Duolingo 120 overall, with scores 115 in comprehension, 115 in literacy, 115 in production, and 100 in conversation. Same goes with the postgraduate courses. IELTS requirement 6.5 with no scores less than 6. PTE 61 overall with no scores less than 54 and 61 in writing. TOEFL 88 overall with scores 22 in reading, 20 in listening, 22 in speaking, and 24 in writing. I'll share the link with you. It is available on the website too. So we are very much transparent with the requirements and everything stuff. Everything is available on the website and we are asking for the same things. So I'll share the detailed material with you guys. और सर मास्टर्स में परसेंटेज की रिक्वायरमेंट क्या है? When it comes for the masters, the first advantage to go for the Royal Holloway is there is no restriction on the gap part. You have student who has passed out in last 10 years, 15 years, just made the application with the genuine justification. Second, there is no limitations in the backlogs. Okay. Third, we need 60% in their bachelor's, 6 CGPA or 60% to get admission into the direct masters. Okay. And fourth point, the universities which are listed under NIRF, National Institute Framework Ranking, where we are happy to accept the student with the scores with 5.5 to 6 CGPA or 55 to 60%. Okay. And GTU comes under that. सर अंडरग्रेड में कितना गैप एक्सेप्ट करेंगे? 2 years. Up to 2 years. Yes. सर दूसरा इसमें जैसे कि NOIS बोर्ड होता है, NWAC बोर्ड होता है, ये एक्सेप्टेबल रहेगा क्या? हाँ, डायरेक्ट एडमिशंस में एक्सेप्टेड रहेगा. ओके. सर 12th में ऐसा कुछ है कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक मैथ में मिनिमम इतने होने चाहिए, ऐसा कुछ है मार्क्स का? We ask for 50% in maths. ओके. जी. क्लियर है सर यहाँ तक? Yeah. जी. The turnaround time for the offer letter for Royal Holloway would be 48 to 72 working hours maximum. If you're not getting the update or offer letter within 3 working days, just ping me on the 4th morning in the group itself, or you can just give me a call or message. Prem, I'm waiting for the offer letter for this so-and-so student. This is the app ID. And within 24 hours, you will get the update. If it's any requirement, we will send you an email. If not, then we will directly issue the offer letter. करेक्ट. सर ये अपने 12th इंग्लिश के मार्क्स पे भी तो आइल्स वेवर मिलता है, तो वो रॉयल हॉलो में कैसा रहेगा? 12th English waiver for the high risk regions like Gujarat, Punjab, and Haryana, we need above 90. About 90. And for the regions apart from these 3, we can accept the student with above 80. ओके. सर ये आइल्स वेवर नॉर्मली यूनिवर्सिटीज टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, तो अगर वो Right. कुछ है? No, ma'am. Unfortunately, हमारे पास internal test नहीं है यूनिवर्सिटी का. ओके. Rather, we ask the student to either go for TOEFL or Duolingo.
Okay, correct, sir. The next step would be after issuing of the offer letter, you need to fulfill the conditions. If the conditions are manageable, like providing the SOP or the letter of reference or any of the XYZ academic document, you can go ahead with the initial deposit, £3,000. Again, so the regions like high risk for Gujarat, Punjab, and Haryana, the deposit would be 10,000. And the other regions, we are accepting the student with 3,000 deposit only. But again, that 10,000 doesn't needs to be paid in full one go only. We can pay it in an installment, as in 3,000 before the interview. Once student clears the interview, then for the test process, he needs to pay the remaining 7,000. तो सर गुजरात के लिए जैसे कि ये तो 10,000 ही आपने बोला ना, वो पे जी, करना हाँ है, जी, तो ये हाँ जी। तो मिनिमम हमें कैश के लिए इतना तो पे करना है, भले हम 2 पार्ट में करें या 1 पार्ट में करें। Yes, हाँ जी। करेक्ट, ओके सर। In the worst scenario, if in case बच्चा fail होता है इंटरव्यू में, full money would be refunded of £3,000. कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। और सर बैचलर की फीस कितनी है, मास्टर्स की फीस कितनी है? मैम इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर बैचलर्स की मैं अगर जनरल फीस कहूँ आपको, तो इट वुड बी अराउंड £20,000. And for the master's course, the fees would be £23,900, the general one. सर ये जो 10,000 पाउंड आपने कैश अमाउंट बोला है, ये हमें इंटरव्यू से पहले ही पे कर देना है? मैम इंटरव्यू से पहले आपको 3,000 पे करने हैं। 3,000 पे करना है, 3,000 जी। ओके। और इंटरव्यू क्लियर होने के बाद फिर हम बाकी के रिमेनिंग 7,000 पे 7,000 करेंगे, जी। ओके। सो मैम इसमें एडवांटेज क्या है? आप कहेंगे कि लाइक वी आर पेइंग मोर, लाइक वेरी मच हाई अमाउंट फॉर द 10,000 पार्ट, बट एज पर द अदर यूनिवर्सिटीज रूल, the student needs to make the 50% of the payment, right, before the enrollment, like before the first day of college or university. So in the same term, here the student is paying 10,000, and when it comes for the 50% of the Royal Holloway fees, it is around 11 to 12,000. So बच्चे ने already 10,000 पे कर दिया होगा, अब उसके पास कोई headache नहीं होगा that he needs to pay more, a large amount. Rather, he can pay only 1,000 or 2,000 and can make the 50% of the payment, which is same as like as per the UKVA for all the universities. Clear? Any doubt in this? नो सर। Perfect. Financial documents, it would be same for all the like courses and same like other universities. We need remaining fees in the balance, and it can be in terms of fixed deposit, savings account, or education loan. Third thing, like this part, we need the living expenses to £12,006. ओके सर। Students who are paying deposit before 1st of June or who have already paid deposit before 1st of June for the September 24 will get the early bird scholarship of £1,000. और अगर सब स्टूडेंट पूरे साल की फीस एक साथ पे करते हैं तो उसमें कोई डिस्काउंट मिल सकता है? मैम नहीं, एज ऑफ नाउ वो कुछ डिस्काउंट नहीं है, बट वी आर सून कमिंग अप विद द मेनी अदर scholarships too. ओके। In Royal Holloway, there is no auto-granted scholarship apart from early bird discount, but we have the other scholarships where student needs to apply, like through the agent, making the application and providing us the statement of purpose for that particular scholarship. And the good part about that is we have around 7 to 8 current scholarships which are mentioned on the website. At the same time, we are soon coming up with the new scholarships also. And student is not being restricted to apply in only one scholarship. If he is eligible in 3 scholarships, he can straight away apply in all the 3 scholarships. If the student is eligible for the more than 3 or 5, he can straight away apply in all that scholarships where he is being eligible. And again, there are high chances that out of 5, like student can get all the 5 or even 3 or 2 or 1 also, the scholarship thing. So I'll share one example with you. The last intake, we had one student
who applied for the two scholarships. And out of those two, student got both the scholarships, and that was amounted to 14,000 pounds. One was for the 10,000, the Manju Mehrotra scholarship, and second was postgraduate master's scholarship, 4,000 pounds. So student got both the scholarships. Clear about the scholarship thing too? Yes, sir. Though the UCAS deadlines have been crossed for the UG applications, but you can still make the application for the UG through the study group portal. Correct, sir. Any doubt or any query for the Royal Holloway? We have courses like business and management, computer science, engineering. We are popular for the media and arts. Then we have somewhat courses of the health and health studies, literature. So we have all the courses available in our university. The major popular courses for our university is computer science. We have various, we have 5 courses under the computer science department. We have a wide variety of courses under the business and management courses too. Sir, And we, like you have like MBA program as well, right, sir? no, we don't have MBA, but we have Masters of International Business and Management, that MSc. Okay. Correct, sir. Any doubt in Royal Holloway? No, sir. We are clear, right? Ji. Applications will be done through the study group portal itself. Now just let me know what are your understandings for the pathway paths for the study group. Sir, pathway में like international year 1 में I have done admissions for few students. जिसमें combined CAS आता है, but आपके कुछ universities के अंदर combined CAS है, कुछ में single CAS है. तो Okay. usually students they prefer the combined CAS ताकि visa के लिए उनको बाद में apply नहीं करना पड़े in between. Okay. So ma'am, मैं आपको just एक ये myth है हमारे पास that though it would be necessary or it would be mandatory to file the visa again in the standalone classes, but I'll tell you the reason and the advantage to go for the standalone classes of study group universities, right? So out of 12 to 13 universities, we have at present 4 universities which are providing the ICAS. Okay. One is Aberdeen. Second is Royal Holloway. Okay. Third is Huddersfield. Huddersfield. Fourth is Teesside. Okay. And yes, one more. Fifth is Liverpool John Moores University, LJMU. ये सारी सर ICAS देती है सर. ICAS मतलब क्या exactly सर? ICAS, it would be for international year 1 and pre-masters, but when it comes for the foundation program, foundation आपको हर एक यूनिवर्सिटी में standalone कैसे मिलेगा? जी. अब ICAS means student will get the visa or will apply for the visa for the entire duration. Pathway, the international year 1 or foundation or pre-masters plus the progression degree too. That is called the integrated CAS, ICAS. When it comes for the standalone CAS, where we call it as a study group CAS, their student gets the CAS or the visa only for the this part, the pathway duration. Correct. But as per the UKVI rule, like many of the students are not like willing to go for this part, like standalone CAS, just because they need to come back to India, right? But as per the UKVI rule, if the duration between the pathway and the progression degree is less than 28 days, student doesn't need to come back.
to file the visa for that progression degree. Rather, our center, our university will help the student to file the visa. And the second, our courses are structured in such a way that student doesn't need to come back, and it would complete, or it would be like there, it would be less than 28 days only there in UK between the pathway and the progression. Clear? Any doubt in this? Yes, sir. Okay, perfect. When it comes for the foundation, there would be 1 year extra leading to the 3 years of bachelor's. But that 1 year extra would be in the same university's campus. Student will be eligible to have all the access of the university facilities. And student would be having the, like this part, the same faculty experience, like in comparison to the students who are going for the direct entry too. Okay, and sir, what will be the minimum percentage for this international year one program? Ma'am, for foundation, I'll start with the foundation thing. For Okay. foundation, we need minimum 40%, which would be 1 year extra. Then coming to the international year one, which would be the same first year of bachelor's, but in the different classroom, to make the basics and make the core of the student more stronger. And at that time, like this part, what we say, the requirement would be 45% for the T side. And for the other universities like Huddersfield and Leeds Beckett and Liverpool John Moores, it would be 55%. And for all the other universities like Royal Holloway, Cardiff, Durham, Sheffield, which are the Russell Group 1 and the top universities, we need 60 and above. So we have universities bifurcation in 2 categories. One is modern universities, which includes Leeds Beckett, Huddersfield, Teesside, Kingston, Liverpool John Moores. And we have top rank, which includes the Russell Group 2, which are Cardiff, Durham, Sheffield, Aberdeen, Royal Holloway, Surrey, Sussex. Clear? Clear, sir. Now, when it comes for the pre-masters, I hope you are clear with the foundation and the international year one, Yes, sir. right? So when it comes for the foundation and the international year one, that is good to go for the UG. But for the pre-masters, we have different programs with the different durations. It can be of 1 term also, which would be for the mid intake, that is May. Like we have the May intake available for around 7 to 8 universities now. And their student will be having the start date of either April, either May or June. They would be completing their pre-masters by the month of August itself. And in September, they would be starting their master's degree. Okay, so ये सर प्री मास्टर्स 1 टर्म मतलब कितना 4 महीने का है या 3 महीने का होगा? जी, 3 to 4 months. It depends on their start date. So अगर April होगा तो 4 months, May June होगा तो 3 months start है. ओके, जी. और इसमें क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट और आइल्स का रहेगा सर? Ma'am, IELTS for some of the universities we will ask for 6 no less than 5.5. For some of the universities we will ask 5.5 no less than 5.52. सर तो ये आपके पास अगर 5.5 ओवरऑल और ईच मॉडल 5.5 कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज मिलेंगी? Huddersfield, ओके, Teesside, then just a minute, I'll tell you. Royal Holloway is there, but we have crossed the deadline for the Royal Holloway. Sheffield, then we have Strathclyde, this much. And for the other universities like Surrey, Sussex, Kingston. सर ये आप बता रहे ये 6 5.5 वाली है? हाँ जी, जो अभी मैं बता रहा हूँ, Surrey, Sussex and Kingston.
sits no less than 5.5. ओके, जी। तो सर ये जो यूनिवर्सिटीज आपने बताई तो ये आई कैसी देंगे क्या, जैसे प्री मास्टर्स लीडिंग टू मास्टर्स डिग्री होगा इनका? मैम वो है हमारे पास अभी हडर्सफील्ड एंड टी साइड ओनली। ओके, टी साइड एंड हडलफिल्ड, इसमें ही आई कैस आप देंगे? जी, एंड लिवरपूल जॉन मोर्स भी है, बट दैट द स्टार्ट डेट इज 10th of April। तो आपके पास अगर कोई स्टूडेंट रेडी है विद द हाँ, फंड्स एंड द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, तो आप उसे लिवरपूल जॉन मोर्स सजेस्ट कीजिएगा। ओके, तो सर ये लिवरपूल जॉन्स मोरे इनकी आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी? लिवरपूल जॉन मोर्स में मैम यू नीड UKVI IELTS फॉर द गुजरात स्टूडेंट्स। This ओके is the requirement from the university, and it would be 5.5, no less than 5.5. ओके, तो ये जो बाकी आपने बताया 3 हडल फील्ड्स है, टी साइड है, और हम्म। ये दोनों, तो ये नॉर्मल आइल्स 5.5 ओवरऑल ईच 5.5 जी। चल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। राइट? और सर ये जो 6 5.5 है ये भी नॉर्मली आइल्स आपने बताया है सरी, हाँ, ससेक्स और किंगस्टन के लिए? सरे ससेक्स किंगस्टन में जी डेफिनेटली, एंड जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं लाइक कार्डिफ, दरहम, शेफील्ड, वहां पे हमें यूकेबी आइल्स चाहिए रहेगा। ठीक है, और सर इसमें परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा? मैम 50%, वी आर ओके टू एक्सेप्ट द स्टूडेंट। अगर बिलो उससे 50% नहीं चलेगा? बिलो 50% भी हो, आप एक बार मुझे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के जो मार्कशीट्स हैं वो शेयर कीजिएगा। केस टू केस बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं। आई विल सजेस्ट यू द ऑप्शंस अकॉर्डिंगली। करेक्ट। द ओनली रीजन इज अभी आपके पास कोई भी बच्चा आ रहा है 5.5 नो लेस देन 5.5 लेके एंड वेरी पुअर इन अकेडमिक्स, आप उसे जाने मत दीजिए। आपके पास ऑप्शन रहेगा। एंड द गुड एडवांटेज फॉर द दिस पार्ट, लाइक फॉर द मिड इनटेक, student doesn't needs to appear for the interview in standalone class, in the study group class। आपके पास ऑफर लेटर आया, कंडीशंस फुलफिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, डायरेक्टली क्लास अप्लाई कर दीजिए। करेक्ट सर। सर ये आपने इंटरनेशनल ईयर 1 जो बताया है, ये रॉयल हॉलो यूनिवर्सिटी, अबरडीन, फिर हडलफील्ड, टी साइड और लिवरपूल, इन सभी में आई कैस होता है इंटरनेशनल ईयर 1 के हाँ साथ? जी, हाँ और जी। इसमें बैंड्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी सर? 5.5 नो लेस देन 5.5 नॉर्मल आइल्स, नॉर्मल आइल्स आई टेस्ट में। राइट? ओके, और ये जो फाउंडेशन कोर्स रहेगा जो 1 ईयर एक्स्ट्रा जाता है, ये इसमें क्या रहेगा इसका रिक्वायरमेंट? 5 no less than 4.5, and in some 4.5 no less than 4.5 too, but that would be UKVI IELTS। ओके, ये यूके भी आइल्स होगा। जी। करेक्ट सर, यहाँ तक क्लियर है। सर ये आपने जो प्री मास्टर्स बोला है, ये 1 टर्म है, 3 to 4 मंथ्स है, इससे ज्यादा भी ड्यूरेशन का होता है प्री मास्टर्स? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, होता है। जी। बट वो फिर मिलेगा आपको सितंबर एंड नवंबर इनटेक में। वी हैव रोलिंग इनटेक्स एवरी ईयर, सो द इनटेक्स वुड बी जनवरी, देन अप्रैल, देन मई, देन सितंबर एंड देन नवंबर टू। ओके, तो तो सर मैडम इसमें स्टार्ट जी। इनटेक का ही डिफरेंस होता है या फिर इनमें क्राइटेरियाज भी, एडमिशंस और आइल्स का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है? एडमिशंस का मैम डिफरेंट नहीं रहेगा, हम्म। बट फॉर द दिस पार्ट, लाइक फॉर द आइल्स क्राइटेरिया वो डिफरेंट हो जाता है। लाइक अगर आप 2 टर्म या 3 टर्म वाले कोर्सेज में जा रहे हैं विच वुड बी फॉर 6 to 8 months, ओके। वहां पे आपका आइल्स रिक्वायरमेंट लो हो जाएगा। लाइक जहां पे अभी हम 6 नो लेस देन 5.5 मांग रहे हैं, वहां पे आपको 5.5 नो लेस देन 5.5 मिलेगा। ओके, और जहाँ पे जी। 5.5 है सर? वहां पे मैम मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा रहेगा 5.5 नो लेस देन 5.5। ओके, तो सामने अगर स्टूडेंट का आइल्स जितना लो होता है उस हिसाब से ये ड्यूरेशन बढ़ जाएगा? ड्यूरेशन बढ़ जाएगा एंड द एबिलिटी टू। जैसे अब मे इनटेक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके हम्म। पास एक स्टूडेंट है 5.5 नो लेस देन 5 बैंड्स, हम्म। तो आप उन्हें नवंबर इनटेक सजेस्ट कर सकते हैं फॉर द सरे यूनिवर्सिटी। ओके। उसका प्री मास्टर्स स्टार्ट हो रहा नवंबर में, एंड इट विल एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त नेक्स्ट ईयर, एंड ही कैन स्टार्ट हिज मास्टर्स बाय सितंबर। राइट, और इसमें भी सर नॉर्मल ही आइल्स रहेगा ना, कोई यूके भी आइल्स का तो नहीं है ना इसमें? नहीं नहीं जी। ठीक है सर। और ये पाथवे में जैसे कि प्री मास्टर्स में आपके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो क्या क्या है पॉपुलर प्रोग्राम्स तो आपके मैम पास? आप, अगर मैं आपको पाथवेज के लिए सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन दे दूं, व्हेन इट कम्स फॉर द पाथवेज, आपका फाउंडेशन, इंटरनेशनल ईयर 1 एंड प्री मास्टर्स वो डिपार्टमेंट वाइज रहता है। डिपार्टमेंट वाइज इट वुड बी लाइक, let's take an example, student is going for the business and management or the law course for the progression degree,
तो उसका फाउंडेशन होगा या इंटरनेशनल ईयर 1, इवन फॉर द प्री मास्टर्स टू उसका नाम ऐसे लिखा हुआ आएगा दैट स्टूडेंट इज गोइंग फॉर इंटरनेशनल ईयर 1 इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट और बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स. Though you will be given an option to choose your progression degree, and उस progression degree में आपके पास सारे options available होंगे. Whether student wants to go for the marketing or law or economics or accounting and finance or finance. So जो pathway रहता है वो generally रहेगा criteria with the name and title, business and management, computing, engineering, life science, and उसके अंदर progression degree में you will be given the option to choose your preference. करेक्ट, क्लियर है सर यहाँ तक. So options आपके पास हर एक अवेलेबल रहेंगे. Let me just show you one quick example about our portal. आप कैसे सर्च कर सकते हैं. Just give me a minute. I hope my screen is visible to you. जी सर. So मैम ये मैंने एजेंट पोर्टल ओपन किया है यहाँ पे. एंड आपको ऐसे दो ऑप्शंस आ जाएंगे whether you want to go for the courses in UK and Europe और नॉर्थ अमेरिका which is USA. So UK and Europe पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप मुझसे पूछ रहे थे कोर्स ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं आपके पास, तो जैसे ही आप सब्जेक्ट एरिया पे सिलेक्ट करेंगे यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल हियर. क्लियर? जी सर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं आपके लिए अब सिलेक्ट करता हूं सिविल इंजीनियरिंग एंड नाउ यू विल आस्क फॉर द यूनिवर्सिटी. लाइक आपका कोई प्रेफरेंस होगा बच्चे का, तो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं टू चेक whether that course is available in that university or not. And I'm talking about the progression degree, that is the first year, the bachelor's degree or the master's degree. ये आपका पाथवे में नहीं आएगा. जैसे मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग किया तो इट वुड बी बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और मास्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, राइट. सो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम प्रोग्राम टाइप, फाउंडेशन, इंटरनेशनल ईयर 1 और प्री मास्टर्स. यहाँ पे हम इंटरनेशनल ईयर 1 सिलेक्ट करेंगे. सो आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पे अवेलेबल. सिविल इंजीनियरिंग कहाँ कहाँ अवेलेबल है. सो इट वुड बी इन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, अगेन अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, एंड कार्डिफ. यहाँ पे इनटेक अवेलेबल यहाँ पे बताएगा आपको. स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर द प्रेफरेंस ऑफ इनटेक 2, आप यहाँ से इनटेक सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन सी हमारा हर महीने एवरी मंथ वी हैव द स्टार्ट डेट फॉर एनी ऑफ द कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स. सो यू कैन जस्ट चेक विद दिस थिंग. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे कार्डिफ सिलेक्ट करता हूँ. It would be 2 semesters duration. The tuition fees would be £20,000 and the intakes would be January, September and November. So मैं आप यहाँ पे जैसे फुल कोर्स डिटेल सिलेक्ट करता हूँ, आपके पास सारे दूसरे ऑप्शंस भी आ जाएंगे. लाइक व्हाट इज द स्टडी लोकेशन, आप यहाँ पे ये पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं. नाउ जो मैं आपको बता था प्रोग्रेशन रूट. सो सिविल इंजीनियरिंग के बाद यहाँ पे ये प्रोग्रेशन डिग्रीज है जो बच्चा सिलेक्ट कर सकता है फॉर द बैचलर्स. जैसे हमने इंजीनियरिंग इंटरनेशनल ईयर 1 सिलेक्ट किया था, तो इंटरनेशनल ईयर 1 वुड बी इन द इंजीनियरिंग एंड देन स्टूडेंट कैन गो फॉर द बीई इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, बीई इन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग विद द इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, बीई विद द सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बीई विद द सिविल इंजीनियरिंग ऑल्सो. सो ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल रहते हैं कि आप बच्चे को क्या ऑप्शन दे सकते हैं इन द प्रोग्रेशन रूट. Same entry requirements. We need to check for the India year 12 60% and 50% in the relevant subjects like maths, science, English. But again, if the scores are not available in 12th, we can check from the 11th also. So we have that flexibility that we can take the scores, we can consider the scores from the 10th or 11th too. Right. Semester dates. So if it's the September intake,
23rd would be the start date. If it's the November intake, 25th would be the start date. If it's January intake, 13th of Jan would be the start date. Everything is given. These would be the deadlines. This is fees. Again, these fees are excluding scholarships. Our scholarships range from £500 to £5,000. So if it's below £10,000, the fees is, if it's the fees is below 10,000, you will get the scholarship of £1,000. If the fees is about 10, like from 10,000 to 13,000, you will get the scholarship of up to 1,500 to £2,000. If the scholarship is like of, we can say 13 to 16,000 pounds, you will get the scholarship of up to £3,000. If it's more than 16,000, like up to 20,000 pounds, then we can go ahead with the £4,000 or £5,000 scholarship. I hope that was clear about the scholarship thing. सर मेरा इंटरनेट थोड़ा No unstable worries, सा मेरा no worries. So miss हो I'll गया just मेरा repeat again. right. I'll just repeat again. जी So we have scholarship ranging from £500 to £5,000, and it goes Okay. on the fees cycle. So if the fees is below 10,000, you will get the scholarship up to £1,000. If the fees is from 10,000 to £13,000, you will get the scholarship of up to 1,500 to £2,000. If the fees is more than 13,000 to £16,000, you will get the scholarship up to £3,000. And Okay. if it's above 16,000, like 20,000, as it has been mentioned, here you will get the scholarship from up to 4,000 to £5,000. And comparatively, if you will check with the direct entry into the first year of bachelor's to Cardiff University, the fees would be high. You can see the potential saving also. The fees for the direct entry would be high, and the fees for the international year one would be less. So this is the advantage. Student can go for the international year one and save the money too. Right, sir. So you are clear with the portal, right? How to find the course, how to suggest the course for the student, how to check the deadlines in semester, everything stuff. Yes sir, clear है. Perfect. सर अपने रॉयल हॉलो यूनिवर्सिटीज में अपने बैचलर्स और मास्टर्स डायरेक्ट है, कोई और यूनिवर्सिटीज नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशंस पॉसिबल हो? मैम डायरेक्ट एडमिशंस सिर्फ रॉयल हॉलो में रहेगा, बट आप मैं Okay. यही कहूँगा मैक्सिमम आप इंटरनेशनल ईयर वन पिच कर सकते हैं, बिकॉज इंटरनेशनल ईयर वन हमारा बहुत ज्यादा प्रेफरेबल रहता है, जस्ट बिकॉज आप डायरेक्ट एडमिशंस के आप पॉपुलेशन देखेंगे फॉर द क्लास, इट वुड बी अराउंड 100 to 200 स्टूडेंट्स पर फैकल्टी. When it comes for us, the international year one, the population would be, or the ratio would be 25 students to one teacher only. And one-on-one classes, one-on-one treatment is given to each and every student. And you might be knowing that when it comes for the Indian students, our students are very much pampered from the days of their childhood. First, their parents pamper them, then their teachers, then we as a counselors also pamper them by giving them everything ready with the stuff like applications, the course suggestion, the university suggestions, then statement of purpose, letter of recommendations, everything is being given, being assisted by us, right? So they need hand holding everywhere. And that's the reason, don't take me otherwise, I'll just give you the facts and figures thing about the direct entry progression rate. When the student is going for the first year of bachelor's directly, the progression to the second year is only 37%, irrespective of any of the UK university. But when it comes for the study group, we have 94% of the students as a progression ratio for the second year of bachelor's. So why student would should go for the international year one is, first, the academics are low and he can be accepted. The IELTS requirements are low, he can be accepted. He can save his money and time both. Correct. Even for the UCAS too, like even for the universities,
where the student has missed the deadlines on the UCAS, they can pitch us, like they can take the admissions in our universities for the international year 1, and we won't ask for anything. Like the application should be done through Study Group portal itself. Okay. Ma'am, any doubt in this thing? Any नहीं query? सर, क्लियर है सर. अभी के लिए मैम मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आप फॉर द मिड इनटेक इफ यू हैव एनी ऑफ द स्टूडेंट फॉर लाइक दो देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज हु आर गिविंग यू द डायरेक्ट एडमिशंस फॉर द मेन इनटेक, राइट? बट मैं ये सजेशन दूंगा, जी. अगर आपके पास कोई लो एकेडमिक्स एंड लो आइल्स वाला बच्चा आ रहा है 5.5 नो लेस देन 5.5 लेके और 50% लेके और 40% टू द पास क्लास लेके और इन द बैचलर्स, आप उसे हडर्सफील्ड, टी साइड एंड किंगस्टन, ये 3 ऑप्शन सजेस्ट कीजिए मैक्सिमम फॉर द मेन इनटेक. मैं ये आपको सजेशन दूंगा टू पिच द स्टूडेंट्स एंड टू टारगेट फॉर दीज 3 यूनिवर्सिटीज. हडलफील्ड, टी साइड और तीसरा क्या बोला सर आपने? किंगस्टन यूनिवर्सिटी. ओके. जी. ओके. राइट. मिड इनटेक के लिए. G mid intake 5.5 no less than 5.5. When it comes for the Kingston University, TOEFL home edition is also being accepted. Just for your information, अगर कोई बच्चा है आपके पास तो. ओके. जी. Even we are accepting rejection cases also. So अगर किसी बच्चे का रिजेक्शन है, वीजा रिजेक्शन, अगर वो प्रॉब्लम नहीं जेन्युइन रिजेक्शन है, we are happy to accept the student in Surrey and Sussex for the mid intake. Ji. Correct. Secondly, we have recently launched one of our exclusive course, Foundation in Nursing. Like students, you might be knowing that like for the nursing part, the requirements are very high, academically and IELTS wise too, right? But we are asking only of 45% in their 12th PCB, IELTS 4.5 no less than 4.5 UKVI in University of Huddersfield. ओके. तो सर ये तो फाउंडेशन कोर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, बिकॉज फाउंडेशन इन तो- नर्सिंग अभी हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है. ओके. और इसमें फिर सर प्रोग्रेशन क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? मैम प्रोग्रेशन में फिर बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, बच्चे को यहाँ पे ये फाउंडेशन क्लियर करना है विद द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स. अगर बच्चा क्लियर करता है Okay. फाउंडेशन, डेफिनेटली उसे डायरेक्टली ऑफर लेटर एंड कैश मिलेगा फॉर द बैचलर्स इन नर्सिंग. राइट. क्लियर है सर? क्लियर. यस सर. एंड अगेन मैं यही कहूंगा, हमारे पास सरे, ससेट्स, देन लीड्स, बेकेट, ये सब अवेलेबल है फॉर द मिड इनटेक. आप अगर यहाँ पे भी बच्चे आ रहे हैं आपके पास, तो इनका इंटरव्यू नहीं आएगा ऑफर लेटर आने के बाद, डायरेक्टली आपको और ये कैश के लिए पेमेंट एंड कैश के लिए प्रोसीड किया जाएगा. बट व्हेन इट कम्स फॉर द हडर्सफील्ड एंड टी साइड, आपका इंटरव्यू होगा बच्चे का एंड देन ही और शी कैन प्रोसीड फर्दर. In pathways, we are asking for the 9260 pounds, 9,260 pounds for cash. ओके. Ji. So I would say let's start it for the mid intake as of now, and soon I'll be visiting your Vadodara branch too, and मैं वहां पे भी आपको एक बार फिर से ट्रेनिंग दे दूंगा, and then we can decide. I'm not saying कि हम हर intake में every university we will target. हम हर intake के लिए 3 to 4 university select करके रखेंगे, and वो फिर हम target करते रहेंगे with our numbers. राइट सर. So मैम अभी हमारा क्लियर है for the mid intake, right? जी सर. May intake का we have start dates in April, May and June, all the 3 months. तो आपके पास कोई भी बच्चा है, आप पाइपलाइन में है, आप पाइपलाइन चेक कीजिए, एंड अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी आता है, आप सिर्फ उस ग्रुप में मुझे मैसेज कर दीजिए, प्रेम वी हैव दिस प्रोफाइल, आप प्लीज मुझे इसका ऑप्शन सजेस्ट कर दीजिए. जो भी रहेगा मैं आपको उस साथ ही बता दूंगा. ओके सर, अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं टीम के साथ, तो Definitely, टीम definitely, डायरेक्टली ma'am. कनेक्ट करेगी. डेफिनेटली वी कैन डू दैट. ठीक है सर. सर जो आपने रिक्वायरमेंट्स ये सारी चीजें बताई है अभी हाँ. क्लियर है मुझे. मैं इसका एक इंटरनल ट्रेनिंग मेरी टीम की अगर मैं कर देती हूँ एक बार,
तो उस हिसाब से फिर टीम को भी आइडिया आएगा किस तरह से आगे प्रमोट करना है इसे। श्योर, इफ इन केस आपको मेरी तरफ से भी ट्रेनिंग रखवानी है तो आई एम अवेलेबल ऑन जी 5th ऑफ ओके मार्च। फिफ्थ फिफ्थ जी नहीं सर, करवा ही देंगे क्योंकि डायरेक्ट ट्रेनिंग आपके थ्रू मिले तो वो फर्क तो रहेगा बिल्कुल। जी। फॉर अ टाइम बिंग मैं ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कर देती हूँ। 5 मार्च का क्या टाइम रह पाएगा सर ट्रेनिंग के लिए, तो मैं रख मैम लेती मुझे हूँ। सिर्फ हाफ एन आवर दीजिए, मैं एक बार शेड्यूल चेक करके आपको बता देता हूँ। ओके ओके ठीक है सर, मेरे पास आपका नंबर है, मैं उस पे जस्ट डन आपको है। एक हाई का मैसेज कर देती हूँ मैं। श्योर, डन है, जी श्योर जी मैम। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू मैम। थैंक माधव जी, यू। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। Yes, sir. Thank you so much. I just wanted to say one thing that we want to focus on uh, what you said. 3 to 4 universities per intake and everything. And uh, if you can coordinate, if we can coordinate and plan a visit for face-to-face meeting, it would be a great step. Uh, श्योर, डेफिनेटली। uh, वडोदरा जी तो मैं बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं विजिट विद इन नेक्स्ट 10 days मैं विजिट करूंगा फॉर श्योर। ठीक है। एंड प्रेम जी, आप रुखसाना मैम, आप लोग का कब विजिट है नेक्स्ट अहमदाबाद का? अहमदाबाद का 1 मिनट सर, ये कमिंग थर्सडे में प्रेक्षा का विजिट है सर। मैम मैं ये सिर्फ आपको अभी मैं जस्ट इनफॉर्मली बता रहा हूँ, मैं आपको मेल भी भेजूंगा ईदर ऑन 11th और 12th। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी 12th ओनली। ओके 12th को आप अगर इफ पॉसिबल लाइक आप है ना अहमदाबाद ब्रांच आ जाइएगा, बिकॉज वी ओके हैव आवर फैकल्टी, वी हैव आवर टीम लीड फॉर द लीड्स वेकेट यूनिवर्सिटी हु इज कमिंग फ्रॉम यूके। ओके जी। ठीक है सर, तो 11th और उनको मैं 12th। ईसीसी में उनको विजिट करवाने वाला हूँ, तो आप परफेक्ट अगर सर, अच्छा पॉसिबल सर, हो तो 12th आप प्लीज प्लान कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी श्योर 12th, सर, बट स्टिल आई कंफर्म द डेट, इट वुड बी ईदर 11th और 12th। ठीक है सर, परफेक्ट करेक्ट। डन परफेक्ट। है। आई विल बी देयर, आई विल बी देयर ऑन द श्योर। 12th फॉर दैट इवेंट। आपका कोई भी आपके सर कोई भी यूनिवर्सिटी पार्टनर्स आते हैं यहाँ पे, फैकल्टीज आती हैं, आप जरूर से हमें इंक्लूड करें उसमें। एंड फॉर श्योर माधव जी। फ्रॉम फ्रॉम द साइड ऑफ ईईसी, you will find either Preksha ji, Rukhsana ji, or I will be there for sure. नहीं, डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इंक्लूड ऑल माय फैकल्टी विजिट्स एंड एवरीथिंग विद द ईईसी ग्रुप, डेफिनेटली। और आप अगर चाहते हैं कि हम उनके लिए कोई प्रमोशंस करें, वहाँ पे कोई स्टैंडीज लगाना है, कुछ लगाना है, आप हमें आर्ट वर्क दे दीजिए, हम वो वहाँ लगवा देंगे। हाँ, whatever you श्योर। want us to do, we will do. If you want us to put some brochures, पहले से आप हमें brochures दे दीजिए। कुछ आपके स्टैंडीज हैं, आप हमें वो दे दीजिए। आप चाहते हो कि आप ये यूज करके हमें वापस कर दो, वो हम कर देंगे, कोई उसमें इशू नहीं है। फील फ्री। जब आपका नहीं कोई नहीं, भी डेफिनेटली। यूनिवर्सिटी आता है, हम इंश्योर करेंगे कि उनको बहुत अच्छा वहाँ पे एक वेलकम मिले, बहुत अच्छे से उनका जी वहाँ पे मतलब प्रोडक्ट नॉलेज हो। और स्टूडेंट फेसिंग सेशंस भी हम कर सकते हैं, काउंसलिंग ट्रेनिंग्स भी हम कर सकते हैं, बट हाउएवर यू वांट इट, वी विल डू इट। यू फॉर नो श्योर, फॉर श्योर। हमारा कल गरिमा से बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और हमें यही रियलाइज हुआ कि कि हमने बहुत मिस किया है पास्ट में, जो हमको आगे जाके हमको कवर अप करना है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको अच्छे से करें, आपको भी अच्छा लगे काम करने में, हमें भी अच्छा जी। लगे। एंड रुखसाना मैम, कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर हम प्रेम जी को कुछ एप्लीकेशंस अभी दे सकें विद इन अ फ्यू हाँ डेज? सर, मिड इनटेक के लिए मैं एक बार टीम से भी बात कर लेती हूँ, जी तो जी, उसमें हम भेज सकते हैं। रिक्वायरमेंट तो लगभग से मतलब कम ही है, ठीक तो है। अभी मिड इनटेक के लिए विल ट्राई सर। मैम आई एम नॉट गिविंग यू इट एज अ टारगेट पार्ट, बट ये मैं अपनी तरफ से आपके साथ कह रहा हूँ, लेट्स फोकस ऑन 5 स्टूडेंट्स, लेट्स मेक इट टू परफेक्ट, 5 स्टूडेंट्स फॉर मिड इनटेक, एंड उसमें आपको मेरी तरफ से जो सपोर्ट चाहिए, एनी टाइम यू नीड माई एक्सलेंट प्रेजेंस, आई विल बी देयर। एक्सलेंट श्योर एक्सलेंट, सर, सुपर एक्सलेंट। श्योर इट्स नॉट अ टारगेट, प्लीज डोंट टेक इट एज अ नहीं नहीं लाइक नहीं, कमिटमेंट दैट टारगेट आई ही एम है आस्किंग सर, यू। टारगेट ही है। और जी हमारे लिए तो हमको, मैं आपको इतना ही बोलूंगा, कल मेरे को मैम, कल अमित सर ने क्या कहा मैम, कि अगर हम ईईसी को बस एक बार खंखार लेना तो 500 बच्चे निकल आएंगे।
तो जब जी। हम औरों को दे रहे हैं, व्हाई नॉट टू स्टडी ग्रुप विच इज आवर प्रेफर्ड पार्टनर। दैट्स इट। आपकी मीटिंग भी है 1 बजे, मैं समझता जी। हूँ। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमने जो अभी हमारी कोर टीम की मीटिंग हुई थी, अब हमें काउंसलर मीटिंग आने वाले 2-3 दिन में आपके अवेलेबिलिटी के हिसाब से कर लेते हैं। तो हमारे Sure. काउंसलर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट का नॉलेज ले लें। जो आपके ब्रोशर्स हैं, एक्सेल्स हैं, आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए। आपने तो सिखा दिया कैसे करना है वेबसाइट से, तो आई थिंक जी। वी आर सॉर्टेड। नहीं, डेफिनेटली सर, मैं जैसे 5th of March हम प्लान करते हैं फॉर द एंटायर टीम मीटिंग। परफेक्ट, थैंक यू सो Yes, मच। sir. थैंक यू। so Thank you, much. sir. Thanks for थैंक your यू, time, गुड डे sir. सर। थैंक यू, Good day. बाय बाय बाय, Bye. थैंक यू।